Good evening, everyone. Welcome to Unacademy and welcome to this class where I'm going to discuss few questions from arithmetic. It will be a mixed practice of arithmetic. It is lesson 4. So just let me quickly check if everything is okay. Good to go. So let me quickly introduce myself. My name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 8 years for CAT and other MBA entrance exams. And I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning and data interpretation. I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams. So guys, agenda for today's session, we are going to just practice the questions which will be the mixed practice. Few of the questions will be from actual CAT papers as well. So let's begin. Those who are new to our channel, guys, quickly subscribe to this channel, Unacademy CAT4MBA. You can also join our Telegram channel, which is CAT4MBA, where you will be getting the PDF notes for the session we conduct on Unacademy platform, as well as for those sessions we conduct here on YouTube. So those who want to attend my special session, they can quickly go to Play Store and download the Unacademy learning app. All these special sessions are completely free of cost, and you can use the code SHAM1 to avail 10% of discount. So let's begin. Hi Ashish, how are you? Try to solve this question. So all of you quickly give it a try to solve. Brass is an alloy. Just a minute. Okay, so in this question it is given that brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy containing 80% copper and 4% zinc and 16% tin. A fused mass of brass and bronze is found to contain 74% copper, 16% zinc and 10% of the tin. Then the ratio of the copper to zinc in the brass is. Any answer, Ashish? No? So guys, listen, brass is an alloy of copper and zinc. We don't know the percentage of copper and percentage of zinc. Bronze is an alloy containing 80% copper, 4% zinc and 10%, 16% tin. A fused mass of brass and bronze is found to contain 74% copper, then 16% of zinc
and 10% of tin. The ratio of the copper to zinc is, so if you go by percentage, it's not a question of means basically you can solve this question by using percentage, but we do have one short trick that I'm going to share with you. First of all, I want you to try this question. If you haven't tried yet, quickly do it. I'll give you 1 minute. Think about it quickly. So brass plus bronze, ये दोनों मिक्स किए हैं. ब्रास में कॉपर है, जिंक है, टिन उसमें नहीं है. टिन इज 0%. वी डोंट नो द परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ जिंक इन ब्रास, but we know in bronze there was a percentage, we know 80%, 4% zinc and 16% tin. And if we mix these two alloy, we are getting a fused mass of brass plus bronze, which mixture of this you can say, which contains 74% of copper, 16% of zinc and 10% of tin. So we don't know the percentage of copper and zinc, but what we can do, we can use here mixtures and alligation, where I can say I can use the concentration of tin to get the ratio of the quantities in which these two things, that is brass and bronze, are mixed. So I can say in brass the percentage of tin was 0%, and in bronze the percentage of tin is 16%, and they're fused in the fused mass of these two, brass and brass plus bronze, the percentage of tin is 10%. So short I can get the ratio in which this brass and bronze are mixed. So I can say this is 6:10, which comes out to be 3:5. Have you understood this part? So I use the percentage of tin. Now understand one thing. Let's say copper is X% and zinc is Y% here. Let's take it as X% and Y%. The same thing, the same ratio will come for the concentration of copper as well. So in brass and bronze, if we consider the concentration of copper, the copper percentage we don't know for the brass, or let's say that is X%, and bronze it is 80% copper, and mixture of these two contains 74% copper. So if we take the ratio, this difference is 6, means this has to be 10, and it is less than 80. ये 80 से कम है, means definitely ये 74 x से ज़्यादा होना चाहिए. So this has to be 64%. That's the only possible value where you can get the ratio as 6:10, which is 3:5. Hopefully you understood this. So that's why I can say copper in brass is 64% and zinc must be 36%. That's an easy question. If you use the mixtures allegation, you can simply solve this question within a minute if you know this method. Otherwise it is a bit calculative by solving. If you want to solve by the other equation framing, that's quite lengthy here. But if you use the mixtures allegation, that is diagonal method, this is the question for you. You can definitely solve this question. Hi Megha. Okay, let me see if I'm able to see the comments. Okay, all of you, Megha, Ashish, you can try for the next question.
This one is really easy. All of you can try it. Okay, you have doubt in the last one? Just let me quickly tell you. The thing is, brass, it is given in the first statement. Brass is an alloy of copper and zinc. So if it is an alloy of copper and zinc, that surely means there is no tin in that alloy. So percentage of tin will be 0%. Is that okay? Or still you have doubt? And after that, using this 0%, we can get the ratio of brass and bronze, right? Okay, so guys, next one is really easy. I don't think I need to even explain this question. This is really a practice question for you. You can just quickly finish with it, and we'll move to the next one quickly. A bag contains 3 different types of coins. Then there are total 220 coins in all, and the total amount in the bag is 160. There are thrice as many 1 rupee coins as there are 25 paise coins. 1 rupee, 50 paise and 25 paise. If there are thrice as many 1 rupee coin as there are 25 paise coins, so if it is x coins, this has to be 3x coins. Then what is the number of the 50 paise coins? There are total 220 coins, so you can take the number of total number of coins as y here. So the total amount is 3x plus 0.5y plus 0.25x, and this total amount has to be 160. After that, the total number of coins is 220, which is 3x plus y plus x. $60 perfectly fine. You can easily solve it. Right, so I won't be solving this equation. That's really easy question. That's right answer, 60. Let's move to the next one. All of you with me? That's simple equation solving, guys, so I'll just keep that part. We have a lot of question to do today. Next one, a diamond weighing 35 grams. Try this one. A diamond weighing 35 grams is worth 12,250. I accidentally dropped and gets broken into 2 pieces having the weights 2:5. The price varies as the square root of the weight. Then find the loss incurred. Anyone? So the price is directly proportional to the square root of weight. Two is to 5 in the sense total is 7. So of course total there were 35 grams.
डायमंड वेइंग 35 ग्राम, सो टोटल तो 7 है यहाँ पे, सो टोटल इज 35 इंटू 5, दैट इज 10 ग्राम्स एंड 25 ग्राम्स. ऐसे दो पार्ट हो गए. So what is the loss incurred? No one has got on the answer yet. What about you, Megha, Ashish? क्या हो रहा है? You're not able to comprehend or you're not able to solve this question. This is a simple question based on the proportionality. Sorry, it's not square root. It is square of the weight. Sorry, it's W square. Right, I want answer from your side for this question. All of you, quickly do it. Is it D? 5000? Okay, so this 12,500 is equal to K into 35 square, right? You can get the value of K. Individual ratio, yes, that's also possible. You can solve by equation or simply you can take the ratios. देखो यहाँ पे 35 स्क्वायर है, देन नेक्स्ट का वेट 10 स्क्वायर है, नेक्स्ट वेट है 25 स्क्वायर, राइट? सो 5 स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, विच इज 49 is to 4 is to 25. Am I right? All of you getting the ratio 49, 4 and 25? ओके, सो अगर पहला कॉस्ट 49 है तो इन दोनों मिला के इन दो पार्ट का कॉस्ट तो सिर्फ 29 हो रहा है, विच इज डिक्रीज ऑफ 20, राइट, कंपेयर टू 49. yes, or you can simply say it is close to 40% decrease. I'm saying it is close to 40%, I can say. So lost income must be close to 40% and 10% is 1225. That has to be close to 5000, right? Perfectly fine, that's correct answer. That's just the approximation. Even if you solve it directly, you can get that. Right? 49 rupees पे 20 rupees का लॉस हुआ, तो अगर ये अमाउंट 12250 होगा तो कितना लॉस होगा? दैट इज 20 इंटू 1225 0 डिवाइड बाय 49. Right? Let's move to the next. Try for this. This is the typical question on mixtures allegation. Let's see how many of you can tackle it properly.
बोलो गाइस क्या आंसर है? बिल्कुल तुमने मिक्सचर्स एलिगेशन अगर किया होगा तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा सबने. Right, and this is the question actually you can finish within a minute. Anyone who got the answer for this question? A and B are the two alloys of argentum and brass prepared by mixing two metals in the proportion 7:2 and argentum and brass का तुम्हें ratio दिया हुआ है. Alloy A, argentum and brass ratio is 7:2 and for B it is 7:11. क्या हो गया? 2:5 क्या आ रहा है? 2:5 कैसे आएगा? नो, इट्स नॉट 2:5. Ashish, you are talking about this question, right? Mega is getting C. Okay. Okay, let's understand one thing. If equal quantities of these two alloys are melted, so basically mixtures allocation in the sense simple तुम ratio भी use कर लेते तो भी इसका आंसर आ जाता है. ये 18 है. This is really easy question once you know this trick. इसको डबल कर दो सीधा. This has to be 14:4. That's 18. एंड यहाँ पे तो 7:11 ही रखते हैं. दैट इज ऑल्सो 18. सो इक्वल क्वांटिटीज इनके मिक्स किए हैं तो यू कैन जस्ट मिक्स इट. दैट इज 21:25 which is 7:5. That's really easy question hopefully, but some of the students still struggle doing this just because you have not practiced the ratios properly. Do the ratio proportion properly. Right, Ashish, are you getting this? Oh, sorry, just let me check. It was 15. So 7:3. 7:5 is the right answer. It's not 25, it's 15. Right, Mega? Have you solved by the same way? Let's move to the next. That was an easy one. Try for this. Yes, so this one is this is the question I can say where the calculation is really tricky. See if we can manage it. The question is so simple but to calculate it is quite tricky, and if you know the calculation trick then you can cut short it, but still thoda to time consuming hai definitely. See if we can try. Definitely this is the question wherein all of you will understand the question, meaning of the question, sab kuch clear hoga. You will know how to do the calculation, but calculations देखो तुम्हें manage कर पा रहे हो क्या तुम लोग? Then we'll learn one trick to solve this question. Anyone?
सो पहले तो ये बताओ, क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आया स्ट्रेट फॉरवर्ड, की कोई क्लू में प्रॉब्लम है या फिर इंटरप्रिटेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है, इंटरप्रिटेशन में कुछ गलती हो रही है, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, और इट इज रियली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वेर यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट. Anyone? So I'm not going to directly solve it for you. I want you to try it. You should be able to interpret the question properly. So there are 125 middle level employees due to in a company, you can say. So the average monthly salary दिया है middle level employees का 5,500 and that of the senior level employees it is 14,000. So कुछ मिडल लेवल एम्प्लॉयज है, कुछ सीनियर लेवल एम्प्लॉयज है, उनका एवरेज सैलरी हमें दिया है. मिडल लेवल का एवरेज है 5,500, सीनियर लेवल का है 14,000. So it looks a question of average, right? And average is the topic wherein most of the students find it easy, and all of you know how to do the questions on average. Okay, so if the average monthly salary of all these employees means it is only talking about the middle level employees plus senior level employees. Okay, find the total number of employees in a company if the middle level and senior level employees in this company forms the 80%. So it doesn't matter, this is the average of middle level plus senior level. It's not all average of the 100. Okay, this is the average of just 80% employees in that company. Okay, so first of all I'll calculate what is the number middle level plus, उसमें से middle level हमें पता है 125 है, and senior level हमें चेक करना है मिक्सचर्स एलिगेशन का. Okay, Ashish, you can solve that way. Yes, Ashish, you got it correct. That's right answer. 250 is the correct answer. तुमने मिक्सचर्स एलिगेशन यूज किया. Right, that's the way, that is the thing you need to use. Basically most of the student, what they do, they think about the average, and you do solve this question by using the averages. But the thing is you'll get a really big equation जहाँ पे तुम्हारे calculations काफी lengthy हो जाएंगे, because look at the values. It is 8,687.5 and that's why the calculation part is tricky. That's what I can say. Question बिल्कुल straightforward है and ये किसी को समझेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है. So most of the student try these type of questions and they end up giving so much time and then skipping it, or depends on how you are applying the shortcut. So if you apply the shortcut, basically the average of the middle employees is given as 5,500. Senior level का average दिया है 14,000. So first of all, first thing you need to do is 8,687.5 and take the difference and you will get the ratio of the middle level and senior level employees. अब यहाँ पे ये calculation भी थोड़ा सा tricky तो definitely है, okay, but it is quite manageable. It's not that tough. So ये आएगा 3,187.5 and this comes out to be, यहाँ पे आएगा 5,312.5. ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यूज थोड़े से मैनेजेबली यू कैन ट्राई इट. 53125 is to 31875. Are you getting the same thing? Ashish, is it right? यस, सो कुछ लोग यहाँ पे गेस वर्क भी कर सकते हो. तुम्हें लग रहा है कि ये 5,000 है, ये 3,000 है, एंड अप्रोक्सीमेटली वो उतना ही आने वाला है. सो दिस रेशियो इज बेसिकली 5:3. इवन इफ यू डू द कैलकुलेशन पार्ट, तुम 5 से डिवाइड करते जाओ, अगेन 5 से डिवाइड करते जाओ, बेसिकली 125 से डिवाइड हो जाएगा वो.
राइट 125 है, यहाँ पे 875 है, 125 से भी डिवाइड हो जाएगा. So however means whatever you do, that's perfectly fine. You must get the ratio as 5:3 for the middle level and senior level employees, and we know 25 है which is multiplied by 25. So 25 into 3 that has to be 75. So middle level plus senior level employees हमारे मिल गए 200. Okay, and this is just 80% of the total employees, and the last part of the question is 80% of the total employees is 200. So definitely if you solve this, 80% is 200, total employees you'll get 250. 250 का 80% 200 होगा. This is a really easy question, easy equation you can get. तो मेन इंपॉर्टेंट चीज था ये रेशियो करना है, राइट. अगर तुम रेशियो से मिक्सचर एलिगेशन डायगोनल मेथड यूज नहीं करोगे, डेफिनेटली इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, but you'll get into the really lengthy and tough calculation, I can say. So you understood this? So mainly CAT में most of the time arithmetic के जब भी questions आते हैं ना, so you need to apply the shortcuts. That is quite important because most of the time arithmetic is the question. Arithmetic पे most of the time lengthy questions मिलते हैं. So you should know, either way you should know the shortcut or you have to skip that. So keep in mind, do not spend too much of time. Just if you understand the question, that doesn't mean you will spend 5 minutes on one question. Okay, you should have you should have the proper trick to finish it within 1 or 2 minutes max. Try for the next one. Vessel contains the mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1. 10 liters of the mixture is replaced with liquid B and the ratio becomes 2:3. How many liters? Really I can say a simple concept questions on ratio proportion. Quickly finish it, all of you. Max to max 40 seconds to finish this question. Such type of question comes, you should be able to finish within a minute. 4:1. 10 liters में कितना होगा? 8 and 2. When sorry, yes, you can do that way. A vessel contains a mixture of two liquids in the ratio 4:1. 10 liters of the mixture is replaced with liquid B. The ratio becomes 2:3. Let's not write the ratio and all. I hope all of you understand the question. I want you to directly apply the method. Chalo, quickly do it. How many of you finding this question tough? कितने लोगों को ये tough लग रहा है? Is it easy or tough? आशीष, मेघा, आशीष तुम्हारा आंसर 16 आया. How many liters of liquid A was present in the mixture in the jar initially? Okay, so initially the ratio was 4:1. That means this is the ratio of A is to B, and we have replaced 10 liters with pure B. Okay, so first में concentration of B है 1/5, और even I can say मैं percentage में बोलूँ तो ज़्यादा easy पड़ेगा हमें यहाँ पे. This is 80%, this is 20%, and now the ratio becomes A is to B is 2:3. easily तुम ratio बता सकते हो. 2/5 is 40% and B हो गया 60%. So initially B का concentration सिर्फ 20% था. Now you added 100% B with that and you are getting the concentration as 60%. मैं percentage इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि percentage में easily convert हो रहे हैं value. It's not compulsory तुम percentage में convert करो. This is 40:20. That means अगर हमने pure B जो है, this is the mixture. Okay,
देन प्योर बी अगर 10 लीटर्स ऐड किया है तो मिक्सचर्स जो होगा वो 20 लीटर्स का होगा, मीन्स द टोटल बिकम्स 30 लीटर्स. सो इनिशियल टोटल एंड फाइनल टोटल दोनों भी टोटल तो 30 लीटर्स ही होने चाहिए, बिकॉज हमने 10 लीटर मिक्सचर्स निकाल के रिप्लेस किया है. सो इनिशियली द रेशियो वॉज 4:1 which comes out to be 5, but total was 30 liters. That simply means it has to be 6 into 4, 24 and 6 liters. Just let me check once the calculation part. Ten liters of liquid is mixed replaced with B. B is 20%, 100%. Ashish, are you getting the answer? I think there is something wrong with me. Just a minute. Mega, this is 40%, 60%. This is 40%. This is 20. Sorry, I made a mistake. This is 40:40. Right, so this is 1:1. So that means ये अगर 10 लीटर होगा तो ये भी 10 लीटर होगा, which means the total must be 20 लीटर. Right, Mega? That's right. मैंने रेशियो गलत लिखा था. So total is 20 liters and definitely initial final दोनों बार total सेम ही होगा. So 4:1. Total is 5. Actually it is 20. So this has to be 4. And this has to be 16. So initially the A's quantity is 16 liter, right? Then आशीष तुमने exactly ये same method apply किया? You did it with the same method or some different? So all of you, I think both of you are quite comfortable using this diagonal method now, right? Yes, okay. Let's move to the next one. Exact same, okay. From a vessel containing pure milk, 9 liter of milk is taken out and it is replaced with equal quantity of water. The operation is repeated twice. How many of you remember the formula for this? The ratio of the milk and water now in the vessel is 16:9. What is the volume of the milk in the vessel initially? Not, I'll just quickly tell you this formula. Just let me know if you remember this formula or not. Typical question on removal and replacement of the quantity, you can say. So milk at the end upon total, this ratio will always be equal to A minus B upon A bracket to the power n, where A is the total quantity, or you can say initial quantity.
So 9 liter of milk is taken out and replaced, and we know the ratio of milk is to water. So milk is to water, this ratio is given as 16:9. Hopefully you know this formula. Megha, Ashish, are you aware about this formula? Yes or no? N is the number of times of replacement and B is the quantity replaced with water. Ashish, remember this formula? अगर तुमने मिक्सचर्स एलिगेशन पढ़ा है तो ये फॉर्मूला क्वाइट पॉपुलर वन इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, राइट. सो इन केस अगर तुम भूल रहे हो तो ये याद रखो, डेफिनेटली क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, सो हाउ टू यूज दिस? मिल्क इज टू वाटर इज 9, 16:9. दैट सिंपली मीन्स टोटल कितना होगा? 16 + 9, दैट इज 25. Do not write 16/9. It's not 16/9. This is milk is to total. So the formula will be 16/25. The operation is repeated only 2 times. Okay. Which is a minus 9 / a whole square. If you take the square root, that is 4/5 will be equal to a minus 9/a. So this is 4a equal to 5a minus 45. A must be 45. So that's answer option D. Understood this, Ashish? Clear or doubt है इसमें? Doubt in the sense straightforward formula based question है, and if not you should be able to remember this formula. All clear? Shall we move to the next one? Okay, try this one. ये क्वेश्चन रखने का बस एक रीजन है. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर वन ट्रिक, दैट्स इट. Because this is the question you can easily solve with the help of equations as well, but ये mixtures allegation से भी solve होता है. The only motto is you should be able to understand where that diagonal method you can apply. There are only deer and duck in a zoo. So when heads counted, there are 204 heads. When legs are counted, there are 512. How many deer are there in the zoo? $52. ओके आशीष, तुमने क्या किया? इक्वेशन से सॉल्व किया. x + y is 204.
and 4x plus 2y is equal to 502, 512. राइट, दैट्स क्वाइट इजी थिंग. बट देखो अभी मैं इतना इजी क्वेश्चन रखने का मोटो क्या था, इक्वेशंस तो कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली राइट मेथड टू डू. Just I want you to elaborate and understand that diagonal method. Whenever you mix two things, you can use that diagonal method. That can be the different scenarios where you can use it. So this is simple example. यहाँ पे भी वो diagonal method use हो सकता है. So how it is related to the mixtures allegation? How can we use that shortcut here? The thing is, there are 512 legs and there are total 204 heads. So on an average, this is the average number of legs, okay, which is 204, right? 512 divided by 204. Is it right? So I can say it is 128 divided by 128 divided by 51. Am I right? मेगा ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या है ये? Now understand, this will be quite this will be between 2 point something कुछ आंसर आएगा इसका. Let's not get into that. Or if you want to calculate it in decimal number, you can do that. Otherwise let it be. We'll keep it in fraction only. So deer and ducks. So deer के लिए 4 legs है and duck के लिए 2 and average number of legs जो है ये आएगा 128 by 51. So I can write 2 as, मुझे 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 102 डिवाइड बाय 51 which is 2, and I can write 4 as 204 divided by 51. And if we take the ratio 128 102, that is 26, is to 204 and 128 कितना आएगा? लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, अब उसको तुम क्या ही शॉर्ट करोगे, राइट? अगर वैल्यूज इजी आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली, इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं होगा डेफिनेटली, बट इन केस लीनियर इक्वेशन का कोई इक्वेशन आता है, मींस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आता है विद डिफरेंट थिंग, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ हेड्स, ये तो वैसे भी काफी इजी इक्वेशन बनने वाला था, राइट? बट कुछ टफ वैल्यूज के साथ क्वेश्चन आता है, वहां पे तुम ये अप्लाई कर सकते हो. सो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द डायगोनल मेथड, राइट? दैट्स डायगोनल मेथड इज जस्ट द कैलकुलेशन बेस्ड शॉर्टकट. सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज वेयर यू कैन यूज दैट, राइट? So simply you'll get the ratio and you can solve it, right? Mega, have you understood this? And for definitely अगर तुम ये क्वेश्चन की बात करोगे तो ऐसा कुछ बहुत टाइम सेव नहीं होने वाला है. दोनों भी तुम इक्वेशन से जाओ या डायगोनल मेथड से जाओ, कैलकुलेशंस भी क्वाइट सिमिलर है, बट डेफिनेटली इन डिफरेंट सिनेरियोज ये बिल्कुल हेल्पफुल है. यू कैन, एंड यही सारे क्वेश्चंस तुम समझोगे तो तुम्हें ये डायगोनल मेथड अप्लाई करना इजी लगेगा और भी. यू विल बी एबल टू, बिकॉज दिस आर द क्वेश्चन टाइप्स वेयर यू नीड टू डिसाइड तुम्हें कैसे सॉल्व करना है. ये सारे क्वेश्चंस जो डायगोनल मेथड से सॉल्व होते हैं वो डेफिनेटली इक्वेशन से भी सॉल्व होते हैं, तो तुम्हें क्लिक होना चाहिए. यू हैव टू यूज डायगोनल मेथड इफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, these are few questions from time, speed, distance now. And a really easy question I can say. Just don't get confused with the wordings, read it carefully. In one attempt, in first go you should be able to understand and quickly finish each and every question within a minute. Try it, it's not tough at all. Okay, 2 person starts from A and B with the speeds
of 29 km per hour and 49 km per hour towards each other. After they cross each other, a person from B covers 145 km to reach A. What is the distance AB? There is one thing that should be mentioned. If it is not mentioned, I don't know कितने लोगों ने assume कर लिया होगा, because that quite obvious. Both started at the same time. Okay, it should be mentioned properly actually. Both started at the same time. Include this condition, okay? Means of course we have to include, otherwise you won't be able to solve. Both started at the same time. Yes, that's right. 390 km is the right answer. Ashish got it correct. What about others? What about you, Megha? दो पर्सन्स एक में की तरफ आ रहे हैं, एक का स्पीड 29 है. सिंपली यू कैन से डिस्टेंस एंड टाइम बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम, सो व्हेनेवर दे मेड द टाइम ट्रैवल मस्ट बी सेम. Somewhere here he is moving with the speed of 29 and B is moving with the speed of 45. Then after they cross each other at midpoint M, the person from B covers 145 kilometers. So after crossing, this distance is 145. Okay, it's 49, sorry. ओके सो आशीष, क्या किया तुमने? रेशियो से सॉल्व किया या फिर अपना फॉर्मूला यूज किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड ऑल? yes, Megha also got it 390. okay, let me quickly do it for you and दोनों का आंसर आ गया तुम्हारे. ओके सो ए ने अगर 29 किलोमीटर ट्रैवल किया तो बी 49 किलोमीटर ट्रैवल करेगा. एंड वी नो वन थिंग, देखो बी ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आफ्टर क्रॉसिंग, दैट सिंपली मीन्स ए ने ये डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, राइट? मीन्स ए हैज ट्रैवल 145 किलोमीटर. कैन आई से A to M distance is 145. I just write here AM and B to M, M to B you can say. अगर AM 29 होगा तो M to B 49 होना चाहिए. दैट्स द रेशो. इसी रेशो में ये दो डिस्टेंस डिवाइड होगा. देन हमें पता है A to M तो 145 है, विच इज 5 टाइम्स. सो दिस हैज टू बी 5 टाइम्स ऑफ दैट. 49 into 5 is 200. It is 245, and 245 plus 145, that comes out to be 390. yes, तुमने टाइम इक्वल कर दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज किया तो भी चलेगा. 145 डिवाइड बाय 29 विच कम्स आउट टू बी 5 hours. फिर हम करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल, D2 विल बी इक्वल टू 49 into 5 hours which comes out to be 245. that's again one and the same thing, not a big deal. ratios करो तो भी चलेगा. yes, that is a similar way. means anyways you, that is just the way of writing in a different way, nothing different method here. let's try for this. 2 points A and B are diametrically opposite points on 6 kilometer long circular road. A cyclist start from A and made 2 rounds. He made the first round with a certain speed, we don't know the speed, and then decreased his speed by 3 km per hour. The interval between 2 passes through P is 50 minutes. Find the speed with the cyclist made the first round.
Think about it, a bit logical question but not tough at all. केयरफुली सोचोगे तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर मिलेगा फर्स्ट गो में. दिस इज ए, दिस इज बी. सो साइक्लिस्ट स्टार्टेड फ्रॉम ए, तो पहली बार वो बी से गया एंड नेक्स्ट टाइम देखो उसने टोटल कितने राउंड्स किए. फर्स्ट राउंड विद अ सर्टेन स्पीड एंड देन डिक्रीज स्पीड 3 किलोमीटर, इंटरवल बिटवीन 2 पासेस थ्रू पॉइंट बी. मतलब वो 2 बार, पहली बार तो हाफ सर्कल जब जाएगा तब वो बी से पास हो गया, वापस एक बार पास हो जाएगा जब उसका 1.5 सर्कल जब बी से पास करेगा. दोनों बार स्पीड का डिफरेंस हमें दिया है 3 किलोमीटर एंड आफ्टर दैट ये पता है कि दोनों में टाइम डिफरेंस 50 मिनट्स का आना चाहिए. हाउ कैन यू सॉल्व दिस? ट्राई दिस क्वेश्चन विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे. और तुम खुद से सोचो तुम कैसे कैलकुलेशंस, कम से कम कैलकुलेशंस करोगे और डायरेक्ट आंसर मिलेगा विदाउट राइटिंग द स्टेप बाय स्टेप मेथड्स. एनीवन? अच्छा, 6 किलोमीटर लॉन्ग सर्कुलर रोड, दिस इज द सर्कमफरेंस. इन केस किसी को ये डाउट है तो डेफिनेटली वो सर्कमफरेंस ही लेना पड़ेगा तभी कुछ सॉल्व कर पाएंगे. तो दिस टोटल डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर. तो दिस इज 3 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर. व्हाट्स द प्रॉब्लम गाइस? क्या आंसर क्यों नहीं आ रहा है इसका? अभी तक आ जाना चाहिए सबका. नो वन? किसी का नहीं आया? इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है. ये बिल्कुल, मतलब तुम सोचोगे कि ये क्वेश्चन आया और तुम अभी तक आंसर नहीं दे पा रहे हो. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन हैव. नॉट येट. व्हाट हैपन? क्या हो रहा है? आशीष, मेघा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर डाउट. क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया क्या है? देखो पहली बार वो ए से स्टार्ट किया, फिर जैसे ही वो फर्स्ट टाइम बी से गया फिर वो कंटिन्यूसली अपना राउंड कर रहा है. सेकेंड टाइम जब वो यहाँ पे आया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, फिर सेकेंड टाइम बी पे आया, इसमें डिफरेंस 50 मिनट्स का है. तो उसका पहले राउंड का स्पीड कितना था एंड नेक्स्ट राउंड का स्पीड कितना है. You are taking too much of time.
नो वन? ओके, एक काम करो, चलो मैं हिंट देता हूं, इसके बाद तो सबको आना चाहिए. डू इट विद द आंसर ऑप्शंस. डू इट विद द आंसर ऑप्शंस क्विकली. And I'm quite sure it will not take more than a minute to answer it. देखो ये ट्रैक है 6 किलोमीटर का, हाफ डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का. अगर मैं 6 के स्पीड से जाता हूं, फाइंड द स्पीड विथ विच द साइक्लिस्ट मेड द फर्स्ट राउंड, राइट ना. तो 6 किलोमीटर के स्पीड से अगर मैं जाऊंगा तो मुझे 1 आवर लगना चाहिए. दैट सिंपली मीन्स मुझे हाफ सर्कल करने के लिए 30 मिनट लगेगा. एंड देखो मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा जब मैं ए पे पहुंच जाऊंगा. उसके बाद मैं स्पीड डिक्रीज करने वाला हूं 3 से. अब मैं 3 से अगर स्पीड डिक्रीज करूंगा, पहले मेरा स्पीड 6 था, 6 को 3 से डिक्रीज करो, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए मुझे 1 आवर लग जाएगा. अभी वापस देखो इधर 30 मिनट लगा, और फिर मुझे नेक्स्ट टाइम ये डिस्टेंस करते, फर्स्ट केस में मुझे 30 मिनट लगे, नेक्स्ट टाइम मुझे 1 आवर लगेगा. कहीं से भी तुम्हें लग रहा है ये 50 मिनट का डिफरेंस हुआ दो पासेस में. सो दैट इज फॉर श्योर 60 तो आंसर नहीं आना चाहिए. सॉरी 6 तो आंसर नहीं होना चाहिए. अरे क्लियर अबाउट दिस आशीष? अगर मैं 9 किलोमीटर के स्पीड से जाता हूं, 9 किलोमीटर पर आवर, दैट सिंपली मीन्स 6 डिवाइड बाय 9 विच इज 2/3. 2/3 मीन्स 40 मिनट होता है. 40 मिनट फर्स्ट लगेंगे, दैट मीन्स 20 मिनट यहाँ पे, 20 मिनट्स यहाँ पे, और फिर मैं डिस्टेंस, फिर मुझे स्पीड कम करना है 3 से 6 किलोमीटर. दैट सिंपली मीन्स मुझे सेकेंड टाइम 30 मिनट लगेगा. हाफ सर्कल, दैट्स द आंसर. आंसर ऑप्शन 9. कितने लोगों को अभी भी समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ? 9 इज द करेक्ट आंसर. एंड आई गेस तुम्हें ये करने के लिए मैक्सिमम 50 सेकेंड्स लगने चाहिए. लुक एट द वैल्यूज, हाउ इजी वैल्यूज आर. Ashish, Megha, guys, all of you, let me know in the comment section, have you understood this or not? अब समझ में आ गया, राइट? व्हाट अबाउट यू आशीष? देखो गाइस, सिंपल सा है, फॉरगेट अबाउट दिस. मैं यहाँ पे 30 मिनट लिखता ही नहीं हूँ. ये 6 किलोमीटर का राउंड है. फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है. आंसर ऑप्शन बी में ट्राई कर रहा हूँ. माई स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट राउंड. I'll be traveling with the speed of 9 km per hour. It will take me 40 minutes to complete one round. And in second round, I'll decrease my speed, -3 कर दो, 6 km per hour. So I'll take 1 hour to complete that round, which is 60 minutes. नाउ अब ये सोचो कि हाफ राउंड तुम्हें कंप्लीट करना है. हाफ राउंड के लिए पहले 20 मिनट लगा होगा, यहाँ पे 20 मिनट्स, एंड नेक्स्ट टाइम हाफ राउंड के लिए सिर्फ 30 मिनट्स लगेगा. तो तुम हाफ राउंड कंप्लीट कर लिया, 20 मिनट में बी पे आ गए. वापस बी पे आने के लिए इधर 20 मिनट लगेगा, इधर 30 मिनट लगेगा. आ गया 50 मिनट्स का डिफरेंस. तो दैट वाज द आंसर ऑप्शन. आंसर ऑप्शन बी, राइट? अच्छा, अब कुछ लोगों को इसको इक्वेशन से ही करना है, तुम्हें आंसर ऑप्शन बिल्कुल यूज ही नहीं करना है. सो आई टेल यू द इक्वेशन वे टू सॉल्व दिस. इक्वेशन क्या आएगा? यहां से यहां पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? हाफ राउंड.
3 kilometer distance with the speed of x, then again next 3 kilometer with the speed of x, उतना ही स्पीड है, देखो स्पीड डिक्रीज नहीं हुआ, हाफ राउंड, and plus next 3 kilometer with the speed of x minus 3, and ये जो टाइम है, ये टाइम का डिफरेंस होना, मतलब मॉड्यूलस तुम्हें जो भी ज़्यादा आएगा अकॉर्डिंगली तुम देख लो, ये डिफरेंस जो है ये 50 मिनट होना चाहिए. 50 मिनट्स इज 50 डिवाइड बाई 60, 5/6 आवर्स होना चाहिए. अब तुम आंसर ऑप्शन में वैल्यूज देखो, बट रादर देन गेटिंग इनटू दिस इक्वेशन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट थिंक प्रैक्टिकली एग्जैक्टली क्या चल रहा है. 50 मिनट का डिफरेंस तुम नॉर्मल स्पीड टाइम डिस्टेंस तुम ज़्यादा इजीली अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आंसर ऑप्शंस, and it won't take too much of time to solve, right? Let's move to the next one. Try for this. Amit Kumar starts driving from Patna to Pilan at PQ, you can directly say. Then so this is the person A starts from P to Q and B starts from Q to P, opposite direction towards each other at 10 a.m. and first person started at 9 a.m. Quickly finish it. A started, then B started. B is 50% faster than A. तो अगर A का स्पीड 100x है, S1, S2 must be 150x. Keep easy values. What time will they meet if P and Q are 300 km apart? Actually, we need not to take these values. Amit Kumar speed is already given, it is 50 km per hour. So this has to be 75 km per hour. The easiest question you can have. बोलो मेघा, आशीष, क्या आंसर है इसका? क्या हो गया, इसका भी आंसर नहीं आया अभी तक. Both started at the different time. That's the only thing you need to do. Observe carefully. पहला 1 hour सिर्फ A चल रहा है, अमित. So Amit will cover 50 km first, and this total distance is 300 km, out of which first 50 km will be traveled by only Amit in the first hour, and after 10 a.m. वो दोनों मिलके travel करेंगे, and the distance is 250 km now, and the average speed will be S1 plus S2, which comes out to be 50 plus 75, that is 125 kilometers per hour, and it will take 2 hours for them to travel. Hopefully you understood how I got 2 hours. 12 noon is the right answer. Time is distance upon speed. Now distance is 250 kilometer बच जाएगा 10 बजे के बाद, after 10 am. मैंने ये लिखा नहीं था, that's it, इसलिए मैं वापस लिख रहा हूँ. That's quite obvious. Straightforward question on relative speed in opposite direction. Try for this. Next, again a typical question on speed time distance. Most of the time ये question तुमने किया होगा, अगर इसके ज़्यादा questions practice किए होंगे तो, most of you, or if not, do it quickly right now. A car after traveling a distance of 110 km develops a problem in engine and proceeds at 3/4 of its former speed. Means definitely the speed is decreased, or definitely late तो होना ही. So and arrives at the destination 60 minutes late. Had the problem developed 30 km further, the car would have arrived 12 minutes sooner. 12 minutes sooner in the sense, देखो 30 किलोमीटर के बाद भी प्रॉब्लम आएगा तो उसके बाद वो 3/4 स्पीड करेंगे. 12 minutes sooner in the sense compared to this, यहाँ पे 60 मिनट लेट हुई,
तो यहाँ पे कार 48 मिनट लेट है एक्चुअल टाइम से। अंडरस्टूड दिस मीन्स डेफिनेटली तुम स्पीड डिक्रीज करोगे तो एक्चुअल टाइम से जल्दी थोड़ी पहुंचोगे। राइट, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। Obvious, and this is the easy question to calculate speed. It is really simple thing, you can do it and it should not take more than a minute to solve this. Anyone who got the answer? Megha, Ashish, bolo jaldi. Try to understand the scenario. A car is traveling a distance of 110 kilometers. A car after traveling a distance of 110 kilometer, देखो 110 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ये पहले ओरिजिनल स्पीड से ट्रैवल किया, फिर 3/4 स्पीड कर दिया, थ्री फोर्थ स्पीड से बचा हुआ डिस्टेंस गए एंड 60 मिनट लेट हो गए। आफ्टर दैट अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया होता और 30 किलोमीटर जाने के बाद आया होता, मतलब ये ओरिजिनल स्पीड से, ये 30 किलोमीटर भी ओरिजिनल स्पीड से एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 3/4, तो फिर 48 मिनट्स लेट। Hopefully you understood this. Is there any confusion? Have you interpreted the question same way जो मैंने explain किया अभी? The only difference is यहाँ पे ये जो distance है 30 किलोमीटर, this is with the speed of s which is the original speed, and यहाँ पे ये जो 30 किलोमीटर है ये 3/4 s से है। बाकी अगर तुम देखोगे तो ये s की स्पीड से 110 किलोमीटर, ये यहाँ पे भी 110 किलोमीटर s की स्पीड से, यहाँ पे ये 3/4 s की स्पीड से, ये भी आगे का डिस्टेंस जो है यहाँ पे 3/4 स्पीड से ट्रैवल किया है, ये कंप्लीट 3/4 की स्पीड से है। Megha, Ashish, is there any problem in interpreting the question? Both of you understood this? मैंने अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया है, ना मैंने आंसर स्टार्ट किया है। दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। If you understand this part, you can try it quickly. Last 30 seconds I'll give you to think about it. Quickly drop in the comment section if you have any doubt. तो क्या प्रॉब्लम है मेगा? आंसर क्यों नहीं आ रहा है फिर? What's the problem? What about you, Ashish? No one? Okay, let me do it for you. So all of you understand what's the logic, what you need to understand here. यहाँ पे दोनों केसेस में सब कुछ सेम है, तो जो कॉमन पार्ट है ना वो छोड़ दो। दिस इज सेम, दिस इज सेम, दिस इज सेम, सिर्फ ये डिफरेंस जो है ये है 30 किलोमीटर का। 30 किलोमीटर ट्रैवल विद द ओरिजिनल स्पीड, 30 किलोमीटर ट्रैवल विद द 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। Am I right, Megha? And because of this difference, यहाँ पे 60 मिनट लेट हुआ, यहाँ पे 48 मिनट लेट हुआ। So what is the difference between time? Time difference is 12 minutes.
Okay, I'm going to erase this and it will just take 2 to 3 steps to solve and get the answer after this. पहले सब लोग मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Because of this 30 kilometer difference, 30 kilometer travel with the 3/4 of the speed and 30 kilometer travel with the original speed, there is a difference of 12 minutes. ये 12 minute difference सिर्फ इसकी वजह से ही आया है, right? Perfect. So करें सॉल्व यहाँ पे आगे. All of you ready? Okay, the next thing is understand. All of you know speed and time are in inverse proportion. Okay, so I'll erase this part. If you understand this, it's really easy question now. Speed and time are in inverse proportion. अगर speed का ratio x is to y है तो time का ratio y is to x होना चाहिए. ये मैं भी use करने वाला हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ. That's it. Okay, so in the first case the speed is 3/4 of the original speed, and in the second case it is traveled with the original speed. I'm talking about just 30 kilometer distance. I'm just talking about this 30 kilometer difference. So the ratio of the speed is 3:4. So मेगा टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए? 4:3 होना चाहिए, राइट? ओके, नाउ अगर फर्स्ट केस में 4 मिनट लगा तो नेक्स्ट केस में 3x, 4x, 3x. This x is 12 minutes. That simply means this is 48 minutes and this is 36 minutes. Right, so Megha, can I say this 30 kilometer in the first case, this 30 kilometer is travel with the 30 kilometer travel, it took 48 minutes, but understand that was not the original speed, that was 3/4 of the original speed. Am I right? So I'll take the second case. सेकेंड केस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वहां पे स्पीड s था एंड टाइम 36 मिनट लगा and distance 30 kilometer tha. We know distance is speed into time. The speed in a second case is s, time required is 36 minutes, and distance traveled in the second case is 30 kilometers. So if I want the speed of the train or speed of the car, it is 30 kilometer divide by 36 minutes में तो पहले divide by 60 करेंगे तो ये hours में हो जाएगा. So do the calculation part now. 6 tens are 6 5s are, which comes out to be 50 kilometers per hour. I hope you will be able to do the calculation part at your own, which is answer option C is the correct answer here. Is it easy, आशीष? क्या हो गया था? ये आया नहीं तुम्हें? Was it confusing? I think this is the easy question if you know this trick. Basically तुम्हें सिर्फ वो 30 किलोमीटर के वजह से ये 12 मिनट्स का डिफरेंस आया है. That's it. बाकी तो बिल्कुल बेसिक्स टाइम स्पीड डिस्टेंस है. Time and speed are in inverse proportion and you can use the ratios. Ratios are always useful. Doesn't matter if you are doing Misch's allegation or percentage or speed time distance. Try to include the ratios in your calculation. Definitely you'll cut short your calculation part. Right, okay, but this is definitely it's not straightforward. थोड़ा सा confusing लगता है most of the student को ये question, but in my opinion it is slightly manageable. If you observe it very carefully, it's short question. It's not lengthy at all. Okay, let's move to the next. This one is also quite popular question. If you know this, you can easily solve it. It's not tough at all. Try it.
there are two trains moving towards each other with the speed of 50 km per hour and 200 km per hour. You can easily understand. Finish it quickly. Distance between them is 200 kilometers. Sorry. Second train start with the speed of 75 kilometers per hour. Started at the same time. Okay. Started at the same time. Okay, so the insect started. An insect sitting on the first train starts flying towards second train with the speed of 75 km per hour. Oh, sorry, this is not 75, this is 50. And the insect is flying at the speed of, which is higher than the speed of the train, 75 kilometers per hour. Any answer? Ashish, Megha, what happened? किया ये क्वेश्चन पहले किसी ने सॉल्व? इससे पहले कभी देखा है ये क्वेश्चन कि नहीं? Okay, take your time. But try to do it at your own. It's interesting question. You can solve it. It's not tough at all and not even lengthy. It's short question. Anyone? सो इंसेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा, इस ट्रेन को जैसे ही वो मिला वहां से यू टर्न लेगा. डेफिनेटली ये ट्रेन आगे आ चुकी रहेगी. यहाँ से जाएगा, फिर वापस यू टर्न. जैसे ही वो ट्रेन्स को मिलते जाएगा वो यू टर्न लेते जाएगा. एंड एट लास्ट ऐसे कब तक चलेगा? जब तक वो ट्रेन्स मिलते नहीं है तब तक. तो ये पूरे प्रोसेस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? What is the distance traveled? Hopefully you understood the question. मेघा, आशीष, तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आया क्या है? Is there any confusion in understanding the question in the comprehension part? Ashish, it's not 129.2.
129.8 तो नहीं है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। व्हाट अबाउट यू मेघा, नहीं आ रहा है? ओके आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो after how much time this train will meet. This train will meet exactly in between time required to trains time required for trains to meet. Opposite direction है S1 plus S2 which is 50 plus 50 100 km per hour. 200 km distance है. Forget about the insect, I'm just talking about the trains. 100 km per hour speed, 200 km distance, दोनों मिलके travel करना है. It will just take 2 hours to meet. Am I right, Ashish? It will take 2 hours for trains to meet. Yes, no? Okay, so the thing is, this insect was traveling with the speed of 75 km per hour. That simply means जब तक वो ट्रेन मिलते नहीं है तब तक ये इंसेक्ट इधर जा रहा था, इधर से वापस, इधर यू टर्न लेके वापस, ऐसे चलते रहेगा. So that simply means this insect has traveled for 2 hours. The insect was continuously flying for 2 hours. Am I right? So what is the distance traveled by that insect? That must be speed of the insect into time. Right, Mega? Distance क्या होता है? Speed into time. So that simply means the insect speed is 75 km per hour and it traveled for 2 hours. By the time trains meet, वो तब तक चल रहा है इधर उधर. So 75 is double is 150 kilometers. So answer for this question is 150 kilometers. All clear? Is there any doubt? Quite interesting questions, but definitely तुमने एक बार भी ये question किया है तो next time ऐसा कुछ आएगा तो बिल्कुल गलती होने का chance नहीं है, and you'll get the answer within a minute. Right? Okay, let's move to the next. So speed up. We have few questions left with us, and at the end of the session we are going to do one interesting puzzle as well. Quickly finish with the questions. Two trains travel in the opposite direction with the speed of 36 km per hour and 45 km per hour. So S1 plus S2 ये हो जाएगा resultant speed, which will be 81 kilometers per hour. A man sitting in the slower train passes the faster train in 8 seconds. There is a train of length L1. I don't know the length, but S1 is 36 km per hour and S2 is traveling with the speed of 45 km per hour.
the man sitting in the slower train passes the faster train. So let's say here is the point जहाँ पे वो person है, तो जहाँ भी वो person रहेगा वहाँ से, उस point से length of slower train we don't know, length L2 be the length of slower train और L be the length of slower train. तो ये लेंथ क्रॉस होने के लिए इस पर्सन को 8 सेकेंड टाइम लगा. सो डिस्टेंस ट्रैवल मस्ट बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन. which is L, and we know distance is speed into time, so L must be equal to 81 km per hour into it just take 8 seconds. So 81 km per hour, 81 into 5 by 18. Hopefully you remember this. What is 5 by 18? Meters per second into 8 seconds. So ये हो जाएगा 9 9s are 81, 9 2s are 2 4s are 9 5s are 45 into 4, that's 180 meter. Right, perfect. Correct, that's 180 meter. Just a matter of wording and you need to comprehend it properly. A simple question on relative speed or train crossing, you can say. Next one. This one is again easy. The speed of the motorboat in still water is 20 km per hour. And the rate of the flow of the river is 4 km per hour. Moving with the stream means downstream. What will be the speed of downstream? It will be 20 plus 4, which comes out to be 24 km per hour. And distance it went is 120 km. So what is the time required in the first case or the downstream? It is 120 divided by 24. That comes out to be 5 hours. Yes, Ashish, that's right. The speed of upstream हमें यहाँ पे calculate करना है. While going against the stream, that is the case where upstream में क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड. पहले क्या था, डाउनस्ट्रीम में बोट प्लस स्ट्रीम. So 20 minus 4, that comes out to be 16 km per hour. Now the question is, what is the distance travel? How much distance it can travel in the same time? Same time is 5 hours because हमने 5 hours निकाला यहाँ से. Right, so 16 km per hour and the time is 5 hours. Yes, you got it correct. That's 80 km. Quite simple one. Straightforward. Concept question on boats and stream basically. Okay, this is the question जो actual CAT paper में आ चुका है पहले. चलो, try for this. Last 2 questions for the day. We are going to solve one puzzle. This is the one question on races, not tough at all. CAT में आया था, इसका मतलब बिल्कुल tough रहेगा, ऐसे कुछ नहीं है. This is the theta question on races. In a race of 3 horses, the first beat second by 11 meters and the third by 90 meters. I guess this is the question from CAT 2019 only. ये last year का ही question था.
880 meters, right? I guess I have to check the answers. Okay, so horse 1, horse 2, horse 3. First bit second by 11 meters and third by 90 meters. So first will cover x meter, second will cover x minus 11, and third horse will cover x minus 90. Right? What about you, Megha? You haven't answered this one. Then second, if the second bit third by 80 meters, that simply means horse 2 and horse 3 में ये जीतेगा. Second will win the race. That means he'll complete horse will complete x meter, horse 2 will complete x meters. By the time horse 3 will just complete x minus 80 meters, right? Now understand, ये दोनों, ये भी h2 और h3 का स्पीड है, ये भी h2 h3 का स्पीड है, तो ये दोनों से हमें पता चलता है कि ये दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, h2 is to h3. That simply means x minus 11 upon x minus 90. I guess your calculation is also right. X upon x minus 80, which comes out to be x square minus 80x minus 11x plus 880 will be equal to x square minus 90x. X square anyways it gets cancelled. (91x) 880 will be equal to 91x इधर जाएगा minus 90x. X will be 880. Yes, correct. Both of you got it correct. Was it easy and short? So इस टाइप के questions भी CAT में आते हैं. Be careful. ऐसे questions miss नहीं होने चाहिए. Okay, don't miss on this. Really scoring. Right, chalo, let's move to the next thing. One last puzzle for the day and we'll stop here. Quickly, write a question on percentage. At the same time, you need to use your presence of mind to solve this question. Answer options थे इसके लिए, but मैंने answer options नहीं रखे हैं. I want you to solve without answer options, and that's why this is quite tricky. To do without answer options, that's a bit tricky thing. If you know the answer options, you can definitely cross check which answer is right? So 4 children A, B, C, D are having some chocolates are having some chocolates each. We don't know the number of chocolates, and that's not कि सबके पास equal number of chocolates है. It's not necessary. So A gives B as many chocolates as he already has. He gives C choice of what C already has. He gives D choice of what D already has. That simply means A must have the highest number of chocolates amongst these 4. Right? Now after this thing, now D gives 1/8 of his own
चॉकलेट टू बी। नाउ मतलब अभी डी के पास जितने चॉकलेट है, देखो ए ने उसको जितने थे उसके ट्रिपल चॉकलेट्स दिए, तो अभी उसके पास काफी ज्यादा चॉकलेट्स हो गए। वो जो नया नंबर ऑफ चॉकलेट्स है उसमें से 1/8 ऑफ हिज ओन चॉकलेट्स ही गिव्स टू बी, एंड लास्टली A gives 10% of the chocolates to C। अभी जितने A के पास है उसका 10% C के पास जाएगा, और जितना है उसका 20% B के पास जाएगा। Now last understand one thing, अगर A के पास X चॉकलेट्स है तो इसके पास 0.1x जाएगा एंड इसके पास 0.2x जाएगा उसी का। दिस स्टेटमेंट इज मीन्स ये कंप्लीट नहीं हुआ था यहाँ पे, रिमेनिंग का नहीं, उसी वैल्यू का 20%, जितना है उसके मतलब 100 चॉकलेट से तो 10% और 20%, वट एवर द नंबर ही हैड, उस नंबर का 10% और 20% सी को और बी को जाएगा। दिस इज द सिंगल स्टेटमेंट, ओके। डोंट गिव 10% फर्स्ट एंड रिमेनिंग का 20%, ऐसे नहीं है। दिस इज वन स्टेटमेंट क्लब्ड। एक ही स्टेटमेंट में दिया है, जो भी नंबर था उसका 10% एंड उसी नंबर का 20% विल गो टू first to C, 10% to C and 20% to B. Finally, all of them have 35 chocolates each. So what is the original number of chocolates they had in the beginning? Anyone who got the answer? Ashish, Megha, क्या हो रहा है? Is it tough question or easy? What do you think? Anyone who have method to solve this question, और कैसे सोच रहे हो रहा है सॉल्व? ओके आशीष, राइट। व्हाट अबाउट यू मेगा? क्वेश्चन तो समझ में आया होगा डेफिनेटली, बिकॉज इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। लास्ट में तुम्हें समझ में आया 10% 20% वो एक ही नंबर करेगा, ओके। ए के पास जितना भी है उसमें से 20% एंड उसी वैल्यू का 20% बी को गया। लास्ट स्टेप, ओके, डू दैट केयरफुली, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके। And finally each of them had 35 chocolates each. $35, $35, $35 and $35। तो टोटल चॉकलेट्स तो हमें पता है कि 140 होने चाहिए। ओके, बोथ ऑफ यू आर डूइंग इन अ रिवर्स वे। क्या करना है तो समझ में आ रहा है, आर यू गोइंग इन अ रिवर्स वे? लास्ट स्टेटमेंट जो है उसको पहले देखो, बाद में देखते हैं पहले क्या हुआ था। देन ए गिव्स 10% ऑफ द चॉकलेट्स टू सी एंड 20% टू बी। अब मुझे बताओ, इसने 10% दिया, इसको 20% दिया, दैट मीन्स ए के पास जो बचे वो इस वैल्यू का 70% है। बोलो जल्दी से, क्विकली। यस, दिस इज द लॉजिकल पजल, लास्ट पजल ऑफ द डे। It's not part of the quantitative ability, you can say that,
It's more of logic and a bit use of percentage and fractions. That's it. Okay, so 70% of x is 35. That simply means x कितना होना चाहिए 50. Am I right? आशीष मेगा समझ में आ रहा है ये? अच्छा एक चीज समझो, इसने 50 मतलब इसका 10% होता है 5 जो a को दिया होगा. 5 इसने a को दिए थे एंड 20% इज 10. 20% 10 होता है, ये 5 होता है. तभी जाके इसमें से 5 गए और 10 के 15 चॉकलेट जाने के बाद इसके पास 35 बचे. अब इसको B को 5 मिले थे और C को 10 मिला था. दैट सिंपली मीन्स B के पास 30 चॉकलेट्स थे एंड C के पास 25 चॉकलेट्स था. क्या ये सबको समझ में आया? आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ. D विल रिमेन सेम. मैं जस्ट वन स्टेप पहले आया. आर यू क्लियर अबाउट दिस गाइस? yes right, you have to go in a reverse way and that's the trick. इस टाइप का एक क्वेश्चन स्नैप में आया हुआ था. सिम्बाइसिस का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें. नॉट दिस मच टफ, इससे भी इजी था एक्चुअली. ओल्ड स्नैप पेपर में था, सिमिलर फ्रंट पे आया है एक बार और लॉजिकल रीजनिंग में. ओके, बिफोर दिस स्टेप D gives 1/8 of his chocolate to B. अब इसके पहले जो है D के पास जितने भी चॉकलेट्स था उसका 1/8 उसने दे दिया. 1/8 किसको दिया था? 1/8 चॉकलेट गिव्स D gives to B. That simply means 7/8 of y is 35. So y has to be 40. यहाँ पे D के पास 40 चॉकलेट्स होने चाहिए. बाद में 35 हो गए. 1/8 मतलब इसने 5 चॉकलेट इसको B को दिए थे. B के पास अभी 30 चॉकलेट्स है. दैट मीन्स B के पास पहले सिर्फ 25 चॉकलेट्स होंगे. ये 5 मैंने वापस ले लिए यहाँ से. I'll erase this now. क्या ये सबको समझ में आया? 40 एंड 25 कैसे हुआ? यस स्नैप में आया था आशीष. ये इस टाइप का था, नॉट एग्जैक्टली सेम. इससे भी इजी था एक्चुअली. इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शंस एंड डिफरेंट वैल्यूज है. वहां पे सिंपली डबल हुआ था. A doubles the chocolates of B, B doubles the chocolate of C and A, C doubles the chocolate of B and A. ऐसा एक क्वेश्चन आया था स्नैप में भी पहले. And that was quite simple. Just तुम्हें रिवर्स में सॉल्व करना है. That's it. Okay, and at last $50, $50, $140. D gives the 1/8 of his chocolates to B. ओके, बी में 20 होगा. जस्ट अ मिनट. जस्ट लेट मी चेक वंस. D gives 1/8 of the chocolate to B. So 7/8 of y is 35. This has to be 40.
जस्ट मिनट, ये सही था। और यहाँ पे मैंने सीक्वेंस चेंज किया है, 10% चॉकलेट्स टू सी एंड 20% टू बी। सॉरी, दिस वॉज 20% टू डी, 20% इज 10, तो यहाँ पे 25 होना चाहिए, और यहाँ पे 5 दिया था, यहाँ पे 30 होना चाहिए। इज इट राइट नाउ? All of you with me? Ashish, is it right now? सही है। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस गलत कर दिया था। दिस वॉज 20% एंड दिस वॉज 10%। 10% इसको दिया, सॉरी 10% सी एंड 20% बी। आफ्टर दैट 1/8 बी को दिया था, तो इसके पास 20 होना चाहिए, इसके पास 30 होना चाहिए, और इसके पास 50 होना चाहिए। एंड सबसे पहले ए के पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट होंगे, मतलब बी के पास 10 ही चॉकलेट होंगे, सी के पास 30 हो गए, इसको डबल चॉकलेट्स मिला था, मतलब 10 होंगे, 10 का डबल 20, 10 + 20 30 हो गया। एंड यहाँ पे ट्रिपल, मतलब 10 का ट्रिपल 30 होता है, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस वैल्यू। तो ए के पास कितना होना चाहिए? 50 + 10 + 20 + 30। इज इट राइट नाउ? 110। सो सिंपल आंसर 110, 10, 10। सबके पास A, B, C, D, फाइनल आंसर 110, 10, 10 and 10. All clear? All of you understood this? So once you know the method, that is quite easy puzzle to solve, not that tough and not a big deal to solve this one. Yes, so guys, done for the day. We'll stop here. If you want to attend the special sessions, go to Play Store and download the Unacademy Learning app. If you want to go for the Plus subscription, you can use this code SHAM1. So guys, special sessions are completely free. If you want to attend the special session, you can just download the app and attend all the special sessions completely free. Okay. Welcome Mega. That's it for the day. Good night everyone. Good night all of you.